नमस्कार दोस्तों, आवाज क्लियर है? एक बार मुझे वॉइस कंफर्मेशन कर दीजिए बेटा। आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट में फर्स्ट टॉपिक है मशीन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। दिस इज द लेक्चर नंबर 1. So we can take this as lecture number 1 from the category of instruction set. Okay, so instruction set में हमने पहले टॉपिक है machine instructions. चलो, let us go for the topics to be covered. So in this topic, what I am going to discuss is COA subject. COA subject is a newly added subject for the ECE students. COA subject, computer organization architecture subject, is a newly added subject for the ECE students. It is not there for EEE students. It is only for the ECE and ECE students. Those GATE ECE लिखना चाहते हो उन लोगों के लिए है. Okay, so actually डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको आ चुका है ये सब्जेक्ट. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको earlier for the GATE ECE the subject of digital electronics, so digital electronics, earlier we used to have microprocessors. And microcontrollers, but now what they have done now, in the place of that, they have kept the subject COA. So they have kept the subject computer organization and computer architecture. Okay, so this is the topic COA. In short, we call it as COA, computer organization architecture. Earlier the subject was not there, so this place, in the place of microprocessor and microcontroller, they have kept the subject computer organization and architecture. The subject they have kept computer organization and computer architecture, COA. Okay dear, so based on this, जितने लोग एक बार लाइव में हैं मुझे एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए बेटा. So if you see the syllabus, of COA, it's not much big syllabus.
The COA syllabus is very small. If you see the syllabus, the syllabus is mission instructions, next addressing modes, CPU, ALU and data path, instruction pipeline, instructions pipeline. And before that, you should know the basics of CO, computer organization, and computer architecture. We should know all these things. Good morning. Good morning काजल. एक बार सिलेबस को नोट कर दो बेटा. कहाँ से हो आप? गेट ECE और ट्रिपल E? Yeah, good morning. So now if you see the topics today, I want to discuss, first of all, I want to discuss what is the basics of computer architecture, computer organization, the difference between the computer architecture versus computer organization, next von Neumann architecture and Harvard architecture, CISC and RISC. What is CISC? I think all of you have an idea. CISC stands for complex instruction
set of computer and the RISC stands for reduced instruction set of computer ओके नेक्स्ट इसके बाद मिशन इंस्ट्रक्शंस एंड गेट मॉडल क्वेश्चंस। तो ये टॉपिक्स पर डिस्कस करना चाहता हूँ। जितने लोग आप गेट ईसी को प्रिपेयर कर रहे हैं, अब तक COA स्टार्ट नहीं किया तो वो भी ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो जस्ट बाय लिसनिंग द यूट्यूब क्लास आल्सो आपको कुछ आइडिया मिलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है COA के सब्जेक्ट का, 1 और 2 सवाल आ रहा है तो उसको आंसर करना भी बहुत ईजी है। तो फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसमें। सब लोग तैयार है बेटा? All of you are ready? चलो, let us go for the here computer architecture. So if you see the computer architecture, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन COA कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपको पहले आर्किटेक्चर आता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन होता है। सी आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट व्हाट टू डू। ओके, तो आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट क्या है, आर्किटेक्चर क्या बोलते हैं ना, आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट व्हाट टू डू। आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट व्हाट टू डू। ओके, कंप्यूटर में हम क्या क्या करना चाहते हैं, व्हाट टू डू। ओके, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज अबाउट हाउ टू डू। तो कंप्यूटर में क्या करना है, तो एक अगर आपने एक हाउस कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, उसके पहले ब्लूप्रिंट रहता है ना, ब्लूप्रिंट रहता है। दैट मीन्स कैसा प्लानिंग होना है, कहाँ किचन होना है, कहाँ डाइनिंग हॉल होना है, कहाँ वेटिंग हॉल होना है, कहाँ स्टडी रूम होना है, एक प्लान करते हैं ना पहले। सो क्या करना चाहते हो उसको, दैट्स व्हाई। सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज अ ब्लूप्रिंट। रिमेंबर these words. Computer architecture is a blueprint for design and implementation of a computer system. It provides the functional details and behavior of a computer system and comes before computer organization. It comes before the organization, and computer architecture deals with what to do. So it is basically contains what? It contains the conceptual design and the fundamental operational structure. It does not involve any connectivity, but ये क्या होता है ना उसमें, conceptual design and fundamental structure. So this is all about the computer architecture. Whereas the computer organization, if you see the computer organization क्या है, is how the operational parts of a computer system are linked together. It is all about the connectivity. So it is all about the how to do. Okay, it is all about the how to do the works. It is all about the how to do. Okay, are you following? एक बार मुझे कंफर्मेशन कर दीजिए बेटा, जितने लोग लाइव में हैं एक बार मुझे थम्स अप दिखाइए, जितने लोग क्लास देख रहे हैं एक बार। हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम ECE हियर और हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन? एक बार मुझे कंफर्मेशन दीजिए बेटा। All are from ECE here?
All of you are comfortable? Can you identify now? Can you tell the difference between CO and CA? So computer organization and computer architecture. So computer organization is about how to do. That means it is all about the connectivity. Suppose if you have a CPU here, if you have a memory here, suppose in this memory we are having the this is the IO devices and these are the external peripherals. Suppose this is our control CPU and this is our RAM and this is our ROM and this is our IO peripherals and these are our timers, such type of things. Okay, so now if you check how to interconnect between them. So the CPU has to perform read and write operations on this RAM, but the CPU has to perform only read-only memory from this, so it cannot write. And whereas with IO it can perform both read and write operations. Okay, and with timer it can control the timer. So how these things are connected internally, how there exists a connectivity between the blocks, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. सो अगर आपने ये 2 दिन COA सेशन को अच्छी तरफ से अटेंड करें तो आपको पूरा गेट के लिए जो COA कॉन्सेप्ट है उसका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा. सो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज हाउ द ऑपरेशनल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, how the operational part of a computer system are connected together. Computer organization deals with how to do, deals with the physical devices and their interconnectivity with the perspective performance improvement. So it is a performance improvement. It is a performance improvement and it always deals with what? It always deals with the interconnectivity with the devices. Interconnectivity. Is it clear? So computer organization deals with the interconnectivity, computer architecture deals with the blueprint of the design. That's it. Okay, चलो. So एक बार ध्यान से देखो, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंसेस मैंने दिया है. So purpose, computer architecture explains what a computer should do. Next, computer organization explains how a computer works. Very clearly, there is a small difference line between the computer architecture and computer organization. दोनों के बीच में देखो, computer architecture explains what a computer should do and computer organization explains how a computer works. Next, target. Computer architecture provides the functional behavior of computer system. Computer organization provides a structural relationship between the parts of the computer system. It's all about the interconnectivity here. It's all about the interconnectivity. And here क्या है ना? Here the blueprint of the structure. Next, computer architecture deals with high level design. So it deals with high level design and it deals with low level design here. Deals with low level design. Next, it actors in computer systems are hardware parts. It is majorly hardware parts and here it's a performance is the major important point. Next, who comes first? Computer architecture is designed first. Next, computer organization is started after the design. So first आपने architecture को design कर रहे, उसके बाद organization आएगा. Clarity हो गया? Okay, चलो, let us go for the basic architectures. The most important architecture here is the von Neumann architecture. How many of you know this von Neumann architecture? Von Neumann architecture. Von Neumann architecture is also called as stored program concept. Stored program concept. So what is the basic purpose of this von Neumann architecture? Von Neumann is the name of a professor or a scientist. So generally in von Neumann architecture, I think you are aware of this von Neumann architecture and hardware architecture. So this is also one of the important feature. In von Neumann architecture, the memory, if you check, the code memory and the data memory both are together. Generally in every CPU will be having a control unit, will be having an arithmetic logic unit and will be having a set of registers. The registers are like accumulator,
these are the basic registers. AC stands for accumulator. AC stands for accumulator. Next, this MAR stands for memory address register. This stands for memory address register. Next, MDR stands for memory data register. Next, CIR stands for current instruction register. This stands for current instruction register. Okay, so PC stands for program counter. PC stands for program counter. Okay, so these are the some set of the registers. So registers and ALU and control unit is a major part of the CPU. And the interesting thing here is this is a CPU and this is the memory unit. So in the memory there is a two memories, code memory and as well as data memory. Code means you can say ROM, data means you can say RAM. Okay, so the architectural unit which contains the code memory and data memory together, उसको हम बोलते हैं von Neumann architecture. Okay, so that means it is having the instructions plus data together. Are you following, my dear? There is no separate space for the data, there is no separate space for the code. Code and data both are running together. So this type of architecture is called stored program concept. Why? Because the program is also stored along with the data. Uska meaning kya hai? What is the meaning of this particular thing? The program is stored along with the data. The program is stored along with the data. That's why it's called as stored program concept. Stored program concept. Program is stored along with the data. Are you following? जितने लोग लाइव में हैं एक बार मुझे थम्स अप दिखाइए बेटा. Can you give an example here? Can you give an example for this von Neumann architecture? Von Neumann architecture basically followed by the microprocessors. Von Neumann architecture basically followed by the microprocessors. Like 8086, 8085. So where a general purpose systems, the code and the data both are together. Okay, so if you see the features of the von Neumann architecture based on the stored program concept, where instruction data and the programming data are stored in the same memory. So if you see, there is an instruction plus data and the program data and the code. Program data means code and the data. So data memory and code memory both are together. So this design is still used in the most computer purposeful. So what is the advantage of this? Is there any advantage or disadvantage with this? Can you tell me? See, if you want to understand the advantage disadvantage, suppose the same bus is available. हमारे पास एक ही बस है. आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? सीपीयू के लिए बस रहता है. बस बोलो तो डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस. So हमने same bus use करना है to access the data memory and code memory. We don't have the separate bus lines. Okay, so no separate bus lines here. No separate bus to access code and data. So same bus we have to use, so we have to switch between the data memory and the code memory. Okay, we have to switch between the data memory and the code memory. That is a very difficult task. Okay, and it is definitely a time taking. As long as you are accessing the data, you cannot access the code.
As long as you are accessing the code, you cannot access the data. It is a time taking process. It is not a faster. Okay, but resources are not much, so there is no complexity in design. Separate bus design करना जरूरत नहीं है इधर, so that is an advantage. So a general purpose system के लिए sufficient होगा. लेकिन अगर आपका application specific है, थोड़ा defined application like washing machine control करना, एक AC machine को control करना और एक robot को control करना, वही तरह applications में आपको definitely थोड़ा application specific integrated circuits होना है. So if you see here, there is another architecture called Harvard architecture. So if you see this Harvard architecture, see if you see the Harvard architecture, in the Harvard architecture, this is the control unit. So this is the control unit. So this is the data memory. And this is the instruction memory. So there is separate instruction memory, separate data memory, separate. So instruction memory separate and data memory separate. Clear? तो इसका डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस क्या रहता है वॉन न्यूमैन एंड हार्वर्ड का? मेजर डिफरेंस देखो एक बार. तो वॉन न्यूमैन एंड हार्वर्ड के बीच में प्लीज सी द डिफरेंसेस. So these are the differences. Von Neumann and Harvard architecture का difference देखो. In Von Neumann, the data and the program memory are stored in the same. The data and program are stored in the same memory. In Harvard architecture, data and program are stored in the different memory. Next, it has only RAM for data and code. It has RAM for data and ROM for code. You understood? So RAM means what? We can perform both read and write, but here on ROM we can only perform the read. Why? Because it's a code, so we cannot write anything into the code, just whatever the code is written we have to read it. So here data and code both are together. Next, as it is the same memory, we can use the common bus for both address and for both addressing the data and code. Okay, for addressing or for accessing, we can say the best word we can say here for accessing. For accessing data and code. For accessing the data and code, common bus we can use. So separate buses to access the data and code. Separate bus to access data and code. Okay, for data and code. Next, code is executed serially and takes more cycles. Code is executed in parallel. This is very important point. Try to understand. In Von Neumann architecture, in Harvard architecture we have a separate bus for the code as well as separate bus for the data. So in Von Neumann architecture, if you are accessing the code, you cannot access the data. Similarly, when you are accessing data, you cannot access the code. So it takes time. So code is executed serially and takes more cycles. But here code is executed in parallel with the data, so it takes less cycles. So it is a faster. Harvard architecture is the faster. Von Neumann architecture gives the slower result. Next, so either in one cycle either you can access the data or the code, but here data and code both in one cycle. एक T state में, suppose if you are taking one T state of the clock signal,
इफ यू आर टेकिंग वन टी स्टेट, तो यहाँ से शुरू हो गया आपका टी स्टेट. So this is what we call as one T state. So in one state, either you can access the code or you can access the data, but in the same T state you can get something from the code, something from the data. Next, here less control signals are used. See here, that is why design complexity is less here. क्योंकि अगर आपने separate बस को इंस्टॉल करना चाहते हो, कोड के लिए सेपरेट, डाटा के लिए सेपरेट, बोलते तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा बढ़ गया ना. कंट्रोल सिग्नल्स, उसको कंट्रोल करने के लिए मोर कंट्रोल सिग्नल चाहिए आपको. सो दैट्स व्हाई हियर मोर कंट्रोल सिग्नल्स, here less control signal. That means here more burden. That means more burden here, more burden on control units, more burden on control units. Here less burden on the control unit, less burden on control unit. Please make a note of all these points first. Please give the response there. Those who are there, please give the response. ये basics है, एक बार नोट करो.
नोट कर दिया? या नोट कर दिया बेटा? यस, परफेक्ट। सीएससी में भी सीओए है, सिलेबस इक्वल है, प्लीज रिप्लाई एनीवन। नो, सिलेबस अलग है, ईसी का सिलेबस अलग है, ओके। सीओए का सिलेबस अलग है। सीओए में कैशे मेमोरी है, ओके। सीओए में कंट्रोल यूनिट पर है, सीओए में बहुत सारे क्वेश्चंस है, ओके डियर। सीएससी का सिलेबस अलग है, ये ओनली फॉर ईसीई है, ओके। हर्षित मॉल, यस स्वागत। राम तो वोलेटाइल मेमोरी है, शुभम गुप्ता ओके, काजल एस। चलो, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक इन द सीओए, ओके। चलो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट आर द one more summarize करना चाहता हूँ. I think some of the students have joined late here, so for those people I am taking the summary of von Neumann and Harvard architecture. एक बार ध्यान से देखो ये, I am taking this summary of von Neumann versus Harvard architecture. This is von Neumann versus Harvard architecture का summary. Von Neumann architecture is similar to the Harvard architecture except it uses bus to perform both instruction fetch and data transfers, so the operations must be scheduled. So here same bus for code and data, so scheduling between the bus, scheduling of bus is required. Scheduling of bus is required. In which architecture? In which architecture? In von Neumann architecture. In von Neumann architecture. Next. On the other hand, the Harvard architecture. जितने लोग लाइव में है मुझे एक बार थम्स अप दिखाइए बेटा। इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं आपको, ये कंटेंट मोर देन इनफ है। सीओए को आप ईसी के लिए इतना शॉर्ट एंड क्रिस्प का कंटेंट कहां भी नहीं मिलेगा आपको, ओके। इतना अच्छा कंटेंट, क्रिस्पी कंटेंट, एक दो दिन में सीओए का सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का तरीका है ये, समझ गया? हाँ जल्दी लिखो। द हार्वर्ड आर्किटेक्चर ऑन द अदर हैंड यूजेस टू सेपरेट बसेस। ये क्या है? टू सेपरेट बसेस, एक फॉर कोड एंड डाटा। दैट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर कोड एंड डाटा टू सेपरेट बसेस। बार बार मैं लिख रहा हूं, आपको माइंड में जाना है ये टॉपिक। The Harvard architecture, on the other hand, uses two separate memory address for data and instruction, which makes it possible to feed data into both the buses at the same time. Single clock cycle में दोनों काम खत्म हो जाएगा। अभी मैं पार्ट पढ़ा रहा हूं, मेरा ब्रेकफास्ट भी चल रहा है। So both are things are happening at the same time. गैस के ऊपर मेरा टीवी बना रहा है एंड इधर मेरा डिजिटल बोर्ड के ऊपर मेरा क्लास चल रहा है। उधर गैस पे ऊपर कुकर है, टी है एंड चपाती भी बना रहा है, इधर क्लास तो जा रहा है। एक सिंगल साइकिल में इधर खाना बना रहे हैं एंड इधर भी क्लास पढ़ा रहे हैं। दोनों थिंग्स एक ही साइकिल में हो रहा है बेटा। विच इज फास्टर? हार्वर्ड इज फास्टर, von Neumann इज फास्टर। गुड मॉर्निंग काजल, ओके। एक सिंगल क्लॉक साइकिल में इधर उधर गैस कुकर का साउंड आ रहा है, आपको सुन रहे? सो आई एम एबल टू एक्सेस द गैस कुकर, आई एम एबल टू एक्सेस द क्लास, आई एम हैंडलिंग बोथ द किचन एंड आई एम हैंडलिंग बोथ द क्लास। आई एम टेलिंग फॉर एग्जांपल, मैं नहीं बना रहा हूं, सम अदर वन इज डूइंग दैट, बट आपको ये बता रहा हूं बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। मेरा क्लॉक साइकिल एकदम हो जाएगा। 8 बजे के बाद मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी होगा, 9 बजे के बाद मेरा खाना भी रेडी होगा एंड क्लास भी खत्म हो जाएगा। फास्टर है ना? हाँ, दैट्स इट। But here, whenever you are using this, I have to be complicated, right? मेरा mind में control unit बहुत perfect होना है, okay? So because I'm using the same channel, I'm using the same time cycle, so to control the things. Yes, good. So, however, the complex architecture only adds to the development cost of the control unit against the lower development cost of the less complex von Neumann architecture. That means कॉम्प्लेक्सिटी कहा जा रहा है, एक बार बताइए आप।
अगर क्लास ओनली आई एम डूइंग, आफ्टर द क्लास आई एम गोइंग टू द किचन, or parallelly in between the noting down I am going to the kitchen, which is more complex actually. The Harvard is more complex because मैं क्लास पढ़ाना के समय मेरा माइंड में कुछ अटेंशन देना है, अरे कुकर का साउंड आ रहा है, क्या करना है उसको, गैस को कम करना है, कब करना है, 2 मिनट के बाद दाल, 2 मिनट के बाद टी, ऐसा मेरा माइंड में एक एक्स्ट्रा टास्क हो रहा है ना. Yes, so which is more complexity in design? Von Neumann is more complex in design or Harvard is more complex in design? एक बार बताइए हाजल जी, अर्शित जी, कुशवाला, इंजीनियरिंग स्टडी कहाँ से हो भैया? सब लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे इधर, कोई डॉक्टर नहीं पढ़ रहे. हाँ, सो ज्यादा डेवलपमेंट कास्ट कहाँ होगा? ऑन Harvard architecture of the more design cost. So however, the complex architecture only adds to the development cost of the control units. Control unit is going to be most costly against the lower development cost of the less complex von Neumann architecture, which employs a single unified caching. So that's it. So these all are the summary. I think I have given you the complete information. Up to now clear hai everybody? Yeah. Now if you see here, in this I was talking about some registers. So today we have discussed till now. So till now what we have completed, my dear? Till now we have completed what is computer organization, what is computer architecture, वो complete कर दिया. And उसके बाद what is von Neumann architecture, what is Harvard architecture, वो भी हमने complete कर दिया. And यहाँ आप registers देखते हैं, जो भी CPU हो, whether it is a 1980s CPU हो और 1919 CPU हो और today 2020 i10 CPU हो, 8085 CPU हो और 8086 advanced Pentium P3 and next Itanium CPU. So एक fundamental registers की मामला है. There are set of registers are required and just the names change and the denotions, representations may be changed, but most of all the registers purpose is same. एक रजिस्टर accumulate करता है, एक रजिस्टर में प्रोग्राम काउंटर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए एक और एक रजिस्टर रहता है, एंड मेमोरी को एक्सेस करने के लिए और एक रजिस्टर रहता है. जस्ट नेम्स विल चेंज, बट देयर आर सम unique registers in all types of CPUs, whether it is a 8085, 8086 or 80x86, 186, 286 Pentium. For example, if you see in 8085 हमने accumulator को A बोलते हैं, 8085 में accumulator को A बोलते हैं, but when it comes to 8086 इसको हम AX बोलते हैं. It is a 16-bit register, it is a 8-bit register. That is the only difference. But the purpose of the accumulator is सलमान खान. सलमान खान क्या करते हैं, बॉलीवुड में कोई है ना, पहले सलमान खान को पहुंच जाना है, ओके ना. सो इसलिए अक्यूमुलेटर क्या है ना, जो भी काम करते हैं, जो भी रिजल्ट करते हैं, जो भी एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसका रिजल्ट कहाँ जाना है, एक बार अक्यूमुलेटर के पास जाना है बस. सो दिस इज अक्यूमुलेटर एंड दिस इज another register, MAR, MDR, memory address register, memory data register, CAR, current instruction register, PC stands for program counter. एक बार उसके बारे में डिटेल में देखेंगे, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, क्या क्या बनता है. देखो बेटा, सो दिस अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक बार नोट कर दो. गुड मॉर्निंग अरुण कुमार, कहां से हो भैया, नोट कर दो. Very clearly I have given the things. पहले पढ़ो.
क्या ये देखिए, what is the first one? The first one is a MAR. MAR stands for memory address register, holds the memory location of data that needs to be accessed. That means, so there is a memory, in that memory there is a memory location, in that memory location there is a data. तो यहां से आपको निकलना है. नेक्स्ट MDR, memory data register. It holds data that is being transferred to or from memory. आप मेमोरी से डाटा ले रहे और मेमोरी को डाटा दे रहे, that is what we call as memory read and memory write. If you are taking something from the memory, उसको हम बोलते हैं memory read. If you are writing something to the memory, we call it as memory write. ओके काजल जी, आपसे कहाँ से है? इंजीनियरिंग फैकल्टी आपसे कहाँ है? आप कहाँ से है? अर्शित कहाँ से हो आप? सब लोग ECE ब्रांच है ना? हाँ. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप मेमोरी कहाँ से डाटा को ले रहे और कहाँ आपको डाटा को लिखना है. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, आई थिंक यू कुड हैव स्टडीड 8085 load instruction and store instruction. So load means what? We are going to load certain memory location with content. Store instruction, sorry, load means we are taking something from the memory and storing into the accumulator. Okay, we are taking something from the memory and storing into the accumulator. What is store? Store means from memory we are sending whatever the content that we are having, that we are storing into the memory. Okay, समझ गया आपको? हाँ, कैसे हो? आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है भैया? आप सब लोग ECE से है, आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? अभी एक महीने में आप एग्जाम है, and tomorrow there is another exam. Some Sunday 𝐂𝐤𝐴𝐻 University is conducting an exam. Some of the universities are conducting some PhD exams also, integrated PhD. हाँ जी जी. Holds the data that is being transferred to or from memory. Next, AC, accumulator. So where accumulator stands for intermediate arithmetic and logic results are stored. आपको पता है accumulator is सलमान खान के पास सब कुछ जाना है. सो जो रिजल्ट करता है, जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस करता है, उसका रिजल्ट कहा जाएगा? सलमान खान के पास जाएगा. इज जस्ट लाइक सलमान खान ऑफ बॉलीवुड. अक्यूमुलेटर बोलते हैं, अक्यूमुलेट करते जाते हैं वो. नेक्स्ट PC, बहुत मोटा मोटा अक्यूमुलेट करते जाते हैं. ऐसा शादी तो नहीं करते लेकिन पूरा अक्यूमुलेट करते जाते. सो PC बोलो तो प्रोग्राम काउंटर बेटा. प्रोग्राम काउंटर इज ऑलवेज एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. ओके, अभी हमने ये इंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ये इंस्ट्रक्शन 1000 मेमोरी लोकेशन में है. सो द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स इन 1002. सो 1002 इज स्टोर्ड इन द PC. PC इज ऑलवेज अ डायरेक्टर. PC इज डायरेक्टर टू CPU. रिमेंबर दिस पॉइंट. PC इज डायरेक्टेड टू CPU. सो इट डायरेक्ट्स द CPU टू वेयर टू गो. ओके, नेक्स्ट CAR means current instruction register. So this current instruction register contains the current instruction during processing. All of you noted? Every clearly I have given MAR, memory address register, MDR, memory data register, AC, accumulator register, PC, program counter register, CAR, current instruction register. बेटा सब लोग लिखो. कानपुर से हो, सही. काजल प्रयागराज से हो, स्वागत कोलकाता से हो, अरुण कुमार झारखंड से हो. सब लोग ECE है ना? हाँ, चलो बेटा नोट कर दिया. डिटेल में क्लैरिटी आ गया इसका पूरा इंफॉर्मेशन. आई थिंक एवरीबडी गॉट द इंफॉर्मेशन. ये एक्चुअली ना डिफरेंट माइक्रो प्रोसेस में उसको डिफरेंट नेम्स रहते हैं. फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, इन 8085 accumulator is called A. In 8086 it is called as AX. In 80186286 it is called as IAX. Something like that. So there is an extension, but the purpose is same. Yes, क्योंकि ECE बच्चों के लिए है, ये CSE के लिए नहीं है. लेकिन CSE के लिए आप विजय सर का क्लास भी सुन सकते हैं. विजय अग्रवाल का सर बहुत अच्छा फैकल्टी है, एकदम तरीके से आपको CSE में कंप्यूटर साइंस में इन डेप्थ COA का एनालिसिस देते हैं. लेकिन आई सजेस्ट फॉर ECE स्टूडेंट्स नो नीड ऑफ दैट, क्योंकि ECE में आपको 1 और 2 मार्क्स आता है. 1 और 2 मार्क्स के लिए आपने 30 आवर्स 30 घंटे 40 घंटे COA सब्जेक्ट के उसको अलॉट करना बहुत अच्छा नहीं है. अभी टाइम बहुत कम है, ये टाइम को बहुत अच्छी तरफ से मैनेज करना है. सो ECE बच्चों के लिए 2 लेक्चर्स आर मोर देन इनफ. चलो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट. क्या आपको पता है व्हाट इज अरिथमेटिक यूनिट एंड व्हाट इज CU? तो वेरी सिंपल. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस करता है. व्हाट आर द अरिथमेटिक ऑपरेशंस? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन.
अगर आप ध्यान से देखो तो 8085 में केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। 8086 में मल्टीप्लिकेशन रहेगा। ओके, एंड समटाइम्स इट इज आल्सो कैन परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। सो ALU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? प्लस, माइनस, multiplication, division and or okay, XOR like this. Okay, so this type of bit level operations it will do. Okay, so the ALU allows arithmetic, addition, subtraction, logical operations to be carried out. So these are the basic things. Next comes the control unit. So the control unit controls the operation of the computer's ALU, memory and IO devices, telling them how to respond to the program instructions it has just read and interpreted from the memory unit. Okay, this is very important. Actually हम पार्ट पढ़ा रहे हैं and parallelly हम sometimes I'm going to some home accessing. उसके पीछे एक इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस पे कंट्रोल यूनिट रहता है। वो कंट्रोल यूनिट विल टेल यू वेयर टू कंट्रोल, व्हाट टू डू, व्हाट एट व्हाट टाइम यू हैव टू स्विच। सो दिस इज वेयर एक्चुअली ईसी पीपल का डिजाइन आता है। ये है आपका VLSI का कॉन्सेप्ट आता है। इसके पीछे आपका हाफ एडर, फुल एडर, वेरीलॉग, VLSI का कॉन्सेप्ट से आप डिजाइन करते हैं। दिस ऑल विल कम अंडर कंट्रोल यूनिट, ऑल द मास्टर ब्रेन। सो दिस द इंटेलिजेंस ऑफ द CPU, वी कैन से द इंटेलिजेंस, can say the intelligence of CPU, where complete VLSI operations. Okay, so it is a complete design of VLSI circuits. VLSI circuits रहता है उसमें, so these VLSI circuits are going to switch between the operations. The control unit controls the operation of the computer's ALU, memory and IO devices, telling them how to respond to the program instructions it has just read and interpreted. एक बार मुझे इनपुट आया, वो इनपुट से मैं क्या करना है, करने के बाद कहाँ जाना है, मेमोरी में कहाँ ऐड करना है, कहाँ स्टोर करना है, कहाँ से लोड होना है, कहाँ से स्टोर करना, कहाँ से लोड करना, ये पूरा स्विचिंग काउंट करता है, एक कंट्रोल यूनिट करता है। The control unit also provides the timing and control signal required by the other computer components. Clarity आ गया बेटा? Everybody you understand? Yeah, these are the things. चलो बेटा, and the last and but not least the bus signals. Everybody आपको पता है, अरे जो कुछ करना है तो आजकल तो ट्रैवलिंग होना है ना। Suppose I am the CPU, I want to go to university or I want to go to some company, so I need a bus, so I need a vehicle. Similarly, CPU को मेमोरी है, मेमोरी बाहर है, आपको पता होना है। माइक्रो प्रोसेस में मेमोरी इंटरनल नहीं है, माइक्रो प्रोसेस को मेमोरी एक्सटर्नल है। कोई ना कोई सम माइक्रो कंट्रोलर्स 8051 को मेमोरी इंटरनल है, उसको अलग बात है। ओके, खुद भी किधर भी जाना नहीं है, उसको ज्यादा इंटरफेसिंग नहीं रहता है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर के लिए बहुत सारा इंटरफेसिंग करना पड़ता है। माइक्रो प्रोसेसर को सब कुछ अलग है, माइक्रो प्रोसेसर एक डमी डिवाइस है, माइक्रो प्रोसेसर को इंटरनली कोई भी नहीं रहता है। माइक्रो प्रोसेसर इज एवरीथिंग एक्सटर्नल माय डियर स्टूडेंट, एवरीथिंग इज एक्सटर्नल। सो हमने इंटरफेस करना पड़ेगा, एवरीथिंग वायरिंग इज रिक्वायर्ड, ए रैम इंटरफेस करना पड़ेगा, ए रॉम इंटरफेस करना पड़ेगा, एक टाइमर इंटरफेस करना पड़ेगा। एवरीथिंग हैज टू बी इंटरफेस टू द माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर को सब कुछ अंदर की बात है। बेटा अगर ये करना चाहते हो, हमारे पास बस होना है। बस तीन टाइप्स ऑफ बस सिग्नल्स है, एक है एड्रेस बस, एक है डाटा बस, एक है कंट्रोल बस। ओके, सो 3 बस सिग्नल्स आर अवेलेबल माय डियर। सो वन इज द एड्रेस बस। एड्रेस बस, पहले एड्रेस तो होना है माइंड में, कहा जा रहा है। अरे आपका माइंड में किधर जाना, उसके पास एड्रेस नहीं है तो किधर जाए, गजनी की तरफ से रोड के ऊपर घूमते रहेंगे। So you should have an address. The microprocessor keeps the address on the address bus where to go. Then address bus goes on searching. एक बार एड्रेस दिखाने के बाद, एक बार एड्रेस फाइंड आउट करने के बाद डाटा बस पिक्चर में आएगा। वो डाटा बस उधर से जो कुछ कंटेंट है उसको लेगा और डाटा बस के पास कुछ है उसको पास रिटर्न करेगा एंड उसको रीड करना, राइट करना। एट दैट मोमेंट वंस द एड्रेस इज डिटेक्टेड, वंस द डाटा बस इज कमिंग टू द पिक्चर, एक कंट्रोल सिग्नल देना पड़ेगा। क्या करना है रे, आप उधर से रीड करो और उधर से राइट करो, ये है कंट्रोल ऑपरेशन। ये इज अ सीक्वेंस ऑफ बस सिग्नल्स। लेकिन हु इज अ मास्टर? द CPU इज अ मास्टर। बस इज नॉट हैविंग एनी एक्सटर्नल कंट्रोलर माय डियर, बस इज ऑलवेज अंडर द कंट्रोल ऑफ मास्टर। मेरा बाइक का किस मेरे पास रहता है, मैं पब्लिक डोमेन में नहीं रहता हूं, सो आई एम द मास्टर ऑफ माई व्हीकल। डू यू अंडरस्टैंड? सो एड्रेस बस रहता है, नेक्स्ट उसके बाद डाटा बस रहता है, उसके बाद कंट्रोल बस रहता है। So, my dear students, you see, address bus is unidirectional. Whereas data bus is bidirectional.
Next, control bus is unidirectional. This is always control is from CPU to memory or CPU to IO. Okay, chalo. Please make a note of these points. जितने लोग लाइव में है एक बार मुझे थम्स अप दिखे बेटा एंड एक बार नोट करो बेटा. लिख दिया सब लोग? चलो नेक्स्ट टॉपिक के पास जाएंगे. आज का टॉपिक है इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस के पहले हम डिस्कस करना चाहता हूं व्हाट इज इंस्ट्रक्शन. सी दीज आर द मिशन इंस्ट्रक्शंस. सो जनरली अगर एक सीपीयू एक टास्क करना है उसके लिए इंस्ट्रक्शन तो करना है. इंस्ट्रक्शन इज अ सेट ऑफ कोड्स दैट कंप्यूटर प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड. द कोड इज यूजुअली इन ones and zeros or machine language. So machine language means ones and zeros are machine language. Okay, so language के बारे में आपको होना है एक बार. एक CPU language, CPU understands programming languages. Suppose if you take the CPU programming languages, CPU को प्रोग्रामिंग करने के लिए कुछ लैंग्वेज होना चाहिए ना. मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा जो कुछ नॉलेज है आपको ट्रांसफर हो रहा है. एक केटी प्रोसेस में, नॉलेज ट्रांसफर के प्रोसेस में हमारे बीच में एक मॉडलिंग लैंग्वेज है, वो है हिंदी है. सिमिलरली सीपीयू के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनता है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस माय डियर, बट व्होएवर व्हाटएवर बी द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, द फर्स्ट लैंग्वेज वाज MLL, the second language was ALP, the third language was high level, and today we are getting the artificial languages also. Okay, so मेरे दोस्तों पहले क्या था? MLL था. What is MLL? MLL stands for Machine Level Language. ये आपको याद रखना है ये बात. ओके, सो दिस आर सम बेसिक्स है. अगर आपने कोई ना कोई लोकल एग्जाम्स लिख रहे हैं, सपोज आप बीटेक होने के बाद गेट के साथ साथ अगर आपका लोकल एग्जाम्स लिखते हैं, लोकल एग्जाम्स बोलो तो क्या है, आपका स्टेट में एसएससी जेई हो सकता है, आपका स्टेट में कोई ना कोई एग्जाम हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, और टीचिंग डिपार्टमेंट में, कॉलेज का यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट में पोस्ट रहता है, और एसएससी जेई होता है जूनियर असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर पोस्ट में. कंपल्सरी कंप्यूटर का बेसिक्स का एक सब्जेक्ट रहता है. Whether you are a ECE branch, EEE branch, CSE branch, or IT branch, or a mechanical branch, civil branch, chemical branch, जो भी हो, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के रूप में एक सब्जेक्ट रहता है. उधर क्वेश्चंस पूछेगा आपको. सो बेसिक क्वेश्चंस रहेगा उधर. सो फर्स्ट कम्स द MLL. MLL बोलो तो मशीन लेवल लैंग्वेज. मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज. सो ये फर्स्ट जीरोस एंड वंस के रूप में रहता है, जीरोस एंड वंस के रूप में रहता है. नेक्स्ट कब है ALP, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग. So this is what we call as assembly language. So it contains some instructions: move, load, store, so these type of things. Okay, next comes the high level language, my dear. हाई लेवल लैंग्वेज बोलो तो इंग्लिश है, पूरा इंग्लिश पाश रहता है, पाश, स्क्रैच नहीं रहता, पाश रहता है. इसको सी बोलते हैं, एम्बेडेड सी बोलते हैं, सी रहते हैं. तो दीज आर सम हाई लेवल लैंग्वेजेस. एंड आजकल और एक लैंग्वेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैंग्वेज पाइथन भी आ गया. ओके, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स.
Okay, my dear. Okay, so please note down this programming languages. And जो भी language हो, ultimately CPU को understandable language क्या है? Zeros and ones only. Even though you have writing assembly language, that has to be converted to zeros and ones only. Even though you have written the code in the C language, that has to be written into zeros and ones only, my dear. Do you understand, my dear? Yeah. So generally, basically, जो कुछ भी programming language हो, suppose if you take assembly language, addition. These are the basic instructions. This is one example for one category. This is an example of one category. This is an example of one category. Can anybody tell me add comes under which category and jump comes under which category, load comes under which category? एक बार बताओ बेटा. आप सब लोग ECE के बच्चे हैं, आप सब लोग माइक्रो प्रोसेसर पढ़ चुके हैं यार, सब लोग भी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स भी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. समथिंग somewhere you could have studied it already. So please tell me add comes under which category? What type of instruction add? चलो, add comes under which category? Very good. No, I am asking. CS, you can go for the Vijay sir class. I suggest for CS के लिए विजय सर क्लास अच्छा रहता है. विजय सर का क्लास होगा, विजय सर का क्लास यू कैन फॉलो. विजय अग्रवाल सर, ओके. इसमें भी CO है, उसमें मेरा एनालिसिस डिफरेंट रहता है. इधर EC का नो मेडा. व्हाट आई वाज आस्किंग ना, these instructions will come under one category, one type of instruction. Add is what type of instruction? A family. Instruction sets basically classified into some family, right? So add is which category, jump is which category, load is which category? That's what I'm asking. Please common sense use करो बेटा. Add comes under arithmetic. Jump comes under branch. Load comes under data transfer. ये तो बेसिक है ना. इंस्ट्रक्शंस का क्लासिफिकेशन आपको बेसिक पढ़ चुका है ना. तो सी हियर, इसके पहले सी
ब्रेड है కూల్ నన్ను ఎగ్జామ్ రాసి వస్తా పాప జీరో వేస్తారా మార్కులు అట్టిగా चलो देखो बेटा ध्यान से नोट कर दिया बेसिकली डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस will come move LDI load accumulator store accumulator okay these are the basic things exchange these are the things arithmetic instructions add sub and or mul division XOR not these are machine control enable interrupt disable interrupt push pop alt NOP no operations like iterative branch iterative instructions loop equal loop it will be in the loop as long as the content is equal to some destination content it will be loop okay next branch control jump call return jump if 0 jump if not 0 these are the things got it noted now there is one more concept here. What is that? The instruction set architecture. If you see the instruction set architecture, what is the instruction, how the instruction inside? So instruction set architecture is a collection of all instructions supported by a CPU. Collection of all instructions supported by a CPU. Okay. So generally instruction set के लिए एक architecture रहता है. Suppose if you take the based upon the operand information, 3 address instruction, 2 address instruction, 1 address instruction, 0 address instruction रहता है. That means suppose if you take the instruction format, here रहता है opcode. So this is the opcode and this is the address field. This is the address field. Sometimes they can have address field 1, address field 2, address field 3.
Okay, so depending upon the things. So here, based upon the operand information, is a basic architecture. Based upon the operand information, हमने classify कर सकते हैं instruction को 3 address instructions, 2 address instructions, 1 address instruction and 0 address instruction. See, if you see the 3 address instruction, these are 3 address instruction. So 3 address instruction में यहाँ एक आप कोड है, एक address field 1 है, address field 2 है, address field 3 है. So this address field, always remember, this address field can be a memory location. Always remember. So this address field can be a register, or this address field can be a immediate data. This address field can be a register. This address field can be a immediate data. This address field can be a memory location. This address field also can be a IO location. Memory location, IO location. Got it? It can be a register, it can be a memory location, it can be a IO location. This is the instruction format. So if you see the 3 address instruction, these are 3 address instruction, 2 address instruction, 1 address instruction. Note करो बेटा. Or if you please note down. Or if you please note down, make a note of these points. Note कर दो. क्या हो गया? नोट कर दिया? So see here, opcode address field 1, address field address 3. Suppose if I am writing the instruction like add, so see the instruction here. So this is the instruction, add R1 comma R3 comma R2. That means what? The contents of R2 will be, R3 will be added and the result will be stored in the R1. So this is the meaning. So address field 1, I am writing like this, add R1 comma R3 comma R2. So it is a 3 address field. The 3 address fields are completely utilized. So this is a content flow from the left to right, from the right to left. The contents of R2 and R3 will be added and the result will be stored in the R1. So the contents of R2 and R3 will be added. The result is stored in the R1. So this is what we call as instruction, add instruction. Okay, so these are 3 address instruction. Noted. Next, let us go for the 2 address instruction. If we say the 2 address instruction, there will be only two address fields, opcode and address field 1, address field 2. Okay, so simple, add R1 comma R3. So there are no other field. So these are source and these are destination. The contents of R3 will be added to the contents of the R1 and the result will be stored into the R1. And the result will be stored into the R1. One of the operand is used as a source as a destination. Okay, let us go for the next single address instruction. So these are 1 address instruction. See here, very interesting. There is no destination register. That's what I am telling. 3 address field instructions में 3 address fields can be busy. 2 address field instruction में only 2 fields are busy. Single address में क्या है, इधर destination ही नहीं है. Add R1. That means what is the the contents of R1 will be added with whom? So if I am saying this add B, suppose I am saying add B, what is the meaning of this? The contents of the B register are added with the contents of the A register and the result is stored in the A. समझ गया आपको? The contents of the B register is added with the contents of the A register and the result will be stored in A. So this is what we call as accumulator based architecture. क्योंकि one of the operands is fixed, one of the operand is always accumulator. So इसको हम क्या बोलते हैं? Accumulator based architecture बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? Accumulator based architecture. Accumulator. No need to explicitly mention about the accumulator. If nothing is mentioned, that is the okay.
Suppose if I am writing like this, one more example I am telling, this is an example. All of you noted? Another example, add immediate 33. What is the meaning of this? Can anybody tell me? Add immediate 33. What is the meaning of this? Can anybody tell me? If you noted, can you tell me what is the meaning of add immediate 33? Add immediate 33 बोलो तो क्या होगा? What can happen with this? What can happen with this? Can anybody tell me? जितने लोग लाइव में हैं मुझे एक बार कम थम्स अप दीजिए बेटा. क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जल्दी से. Add immediate 33 means what? The content 33 is added to the accumulator and the result is stored in the accumulator. All of you understood? Sir, EEE students can attend these lectures because there are lecture for ECE. Yes, you can attend, लेकिन आपके लिए ये subject नहीं है ना COA. If you are writing the GATE ECE paper, then only you can attend, my dear. Okay, don't waste the time. If you are writing the GATE ECE paper, then only you can attend. Otherwise, no need. Why? Because for CSE people, this subject is not there. Sorry, for EEE student, this subject is not there. It is only for ECE students. Okay, chalo. Last one is a zero address instruction. Zero address instruction में there is no operand. There is no operand. Simply speaking, there is no operand. There is no operand. There is no operand. For example, if I write add, just a simple add. If I write add, where the content is going to be added? Both operands are taken from the stack. Suppose if I am writing example, as add, that's it. सर प्रीवियसली तो एटलीस्ट आपने एक ऑपरेंड देते हैं और एक ऑपरेंड हमने अक्यूमुलेटर से लेते हैं, लेकिन यहाँ वो दैट सिंगल ऑपरेंड आल्सो यू आर नॉट गिविंग. इन दैट केस वेयर इट विल गो? ऐड बोलो तो हमको दो नंबर चाहिए. सो इन दिस इंस्ट्रक्शन विल गो टू द स्टैक. इन द स्टैक हमको टॉप में दो कंटेंट रहेगा. सो जो कुछ कंटेंट रहेगा टॉप में, सपोज ईयर 45 इज देयर, ईयर 23 इज देयर. सो ये क्या होगा? दिस 45 एंड दिस 23 विल बी एडेड and the result will be stored again into the stack, top of the stack. That's it. So this is a stack based architecture. क्या बोलते हैं उसको? This is a stack based architecture बोलते हैं. So both the operands are taken from the top of the stack. Both the operands are taken from the stack. समझ गए आपको बेटा? Is it clear or not? चलो नेक्स्ट और एक एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल हॉल्ट, सिस्टम हॉल्ट हो जाएगा. CLC क्लियर कैरी हो जाएगा. STC सेट कैरी हो जाएगा. ओके, NOP नो ऑपरेशन. दीज आर आल्सो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन. उसके एड्रेस फिल कुछ भी नहीं है. ओके चलो try to understand this question. Try to do this question, my dear. Try to solve this question. మందులు ఏమేమి అని చెప్పు సార్.
Try to answer this question. Consider digital computer which supports the 3 address instructions. So it is a 3 address instruction. The 3 address instructions. Each with 21 bits. If the address length is 6 bits, then the maximum and the minimum, how many instructions the system can support? Can anybody answer this question? See, मुझे response तो चाहिए बेटा. ये YouTube का क्लास है, मैं बच्चों का faces नहीं देख सकता हूँ. So आप तो कुछ response दीजिए. Answer please. देखो बेटा, इट इज 3 address field instruction. So first 3 address field instruction का syntax कैसा रहता है देखो. So it will be opcode, address field 1, address field 2, address field 3. Opcode. So this is the address field 1, this is the address field 2, this is the address field 3. Consider digital computer which supports the 3 address instructions each with 21 bits. So this total instruction size itna hai. And he has very clearly mentioned if address length is 6 bits. So this address length is 6 bits. This is 6 bits. This is 6 bits. This is 6 bits. So what is the opcode size then? The total is 21 bits. So 6 plus 6 plus 6. 18 means this will be 3. So he is asking the maximum and minimum, how many instructions can system. So if you see the size of the opcode, for opcode how many bits are required? So the size of the opcode is 3 bits. Size of the opcodes is 3 bits. So the number of opcodes, the size of the opcode is 3 bits. So the number of opcodes is 2 power 3. 2 power 3 means 8. Okay. So the number of opcodes is 2 power 3, 8. So number of instructions. So this is the maximum number of instructions, my dear. The minimum will be always 1. Yes or not? Now hoga. So the maximum number of instruction is, maximum number of instructions will be 8. The minimum number of instructions will be 1. Why? Because minimum to minimum एक opcode तो रह सकता है, single opcode. So that's the point. Answer this question.
Answer please. Good morning. Consider a digital computer which supports 32 two-address instructions. So this is the opcode. So if you take this as the two-address instruction, this is the opcode, this is the address field 1, this is the address field 2. Consider a digital computer which supports 32 two-address instructions. So number of instructions is 32. The number of instructions is 32. Number of opcodes 32. तो साइज ऑफ ऑपकोड कितना होगा? तो इंस्ट्रक्शन ऑपकोड बोथ आर सेम, तो साइज ऑफ ऑपकोड कितना होगा? सो साइज ऑफ ऑपकोड शुड बी लचे, so this is a 32 ना, that means 32 should be greater or equal to 2 power n. So where is n is the number of bits allocated for this. Okay, so here n is equal to what? Size 5 is equal to, so this is the 5. Next, if address length bit is 8 bits, so this is 8 and this is 8, that's it. And the length of instruction is what? So this is the length of the instruction. So size of the opcode is this. So length of instruction is, this is 5 plus 8 plus 8, so 21 bit. Okay, 21. टू एड्रेस फील्ड ना, और एक एड्रेस फील्ड भी है ना, 8 plus 8 एंड क्लियर. काजल, ऑपकोड का साइज निकालना है. नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस मींस नंबर ऑफ ऑपकोड्स. अगर आपके पास n बिट्स है, सी कैसे अंडरस्टैंड करना, सपोज ऑपकोड 5 बिट्स है, सो इफ यू सी द ऑपकोड 5 बिट्स 1 2 3 4 5 and 5 bits is 0 0 0, so this can be one type of instruction. 0 0 0 1, this can be one category of instruction. 0 0 1 0, this another category of instruction. 0 0 0 1 1, this another category of instruction. Like that 1 1 1 1 1, this another category of instruction. So for example, if you take this, can be a, it can be some representation for some NOP, this can be some a type of instruction add, this can be add immediate, this can be XLT, this can be exchange, something like that. समझ में? तो अगर आपके पास 5 बिट्स है तो 5 बिट्स से आपने कितना इंस्ट्रक्शंस ऑपकोड्स लिख सकते हैं? 32 ऑपकोड्स लिख सकते हैं. चलो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. गेट 2016 का सवाल है. Try to answer this. A processor has 40 distinct instructions and 24 general purpose registers. A 32-bit instruction word has an opcode, 2 register operands and an immediate operand. The number of bits available for the immediate operand field is dash. A गेट 2016 का सवाल है. Try to answer. Try to understand.
आंसर CSC के ब्रांच के क्वेश्चन है। मेरा हमारा EC में अब तक तो क्वेश्चन ही नहीं आया CSC ब्रांच। A processor has 40 distinct instructions and 24 general purpose registers. A 32-bit instruction word has an opcode, 2 register operands and an immediate operand. Very good question. See here, first he has given information, number of instructions. Number of instructions is 40. So number of opcodes is also 40. So you should understand a 32-bit instruction of opcode, 2 register operands and 1 immediate operand. That means how many address fields? If you see how many address fields, definitely either opcode will be there, an opcode, 2 register operands, 1 address field for register operands and an immediate operand. So kitna? 3 address field instruction. It is a 3 address field instruction. So this is a opcode. So this address field 1, so which is the register 1, this address field 2, register 2, and there is some immediate, it can be some immediate. So it is a address field 1, this address field 2, this address field 3. So this is the address field 1, this is the address field 2, this is the address field 3. Okay, समझ में आपको? What is given here? A processor has 40 distinct instructions. So number of 40 opcodes, 40 means what is the size of opcode? How to find out the size of opcode? That means if you take number of opcodes, 40 should be greater than or equal to 2 power n. That means हमारे पास n bits है तो हम 2 power n opcodes को access कर सकते हैं. तो n कितना होगा इधर देखो. If you take 5, 2 power 5 32 आ रहा है. So if n is equal to 5, 2 power 5 32. 32 is lesser than 40. That means you are missing 8 instructions. Suppose if n is equal to 6, 2 power 6 64. 64 is greater than 40. So आपको 40 तो cover हो रहा है ना. So 40 तो cover हो रहा है. So remaining 24 instructions, 40 instructions है. 24 instructions are आपने unused है. लेकिन 40 instructions को आप use कर सकते हैं ना. So that's why. So this will be 6. Next, register field 1. So number of general purpose registers कितना हो गया? Number of registers. Number of registers कितना हो गया बेटा? Number of registers is 24. So ये 24 registers को access करने के लिए कितना bit चाहिए? So size of bits required to access the register. Bits required for access. Bits required for access. How much? अगर आपके पास 3 bits है, 3 bits से आपको क्या क्या आता है? 000 R0, 001 R1, 010 R2, 111 R7 तक ही आता है. अगर आपके पास 4 bits है, 4 bits है तो 0000 R0, 1111 R16 तक ही आता है. अगर आपके पास 5 bits है, 5 bits से आप कहाँ से कहाँ तक जाता है? So this will be 00000 can be R0. Next 11111 it can be R31. So 32 register आप access कर सकते हैं. उसके process में आपको 24 registers भी access कर सकते हैं. So the number of bits accessible is 5. अगर आपके पास 5 है, 5 bits allocated है, तो 0000 5 zeros will be R0, 00001 R1, 0010 R2. So 1111 are like that. Okay, so the number of bits required for the register access is 5. Okay, so that's why. So register field, this is 5, this is 5. And question asked here is, a processor has 40 distinct instructions and 24 general registers, a 32-bit instruction word. So the size of the instruction is 32 bit. So 32 bit. Okay,
Then question asked is the number of bits available for the immediate operand is asking. What is the answer now? Tell me. Excellent. Right answer 16. 16. So 16 is the right answer. All of you clear, my dear? Sixteen is the right answer. Enough for today. So today what we have discussed एक बार summarize करेंगे. Today हमने just I was talking about digital electronics. In that microprocessor was there earlier, but now the microprocessor microcontroller removed and इसका place में आपको computer organization computer architecture add हो चुका है. And the syllabus only 4 topics. Machine instructions. The syllabus is very simple. The machine instructions, addressing modes, CPU data path and instruction pipelining. So these are the 4 topics. Okay, and the topics to be covered today, we have discussed the basics of computer organization, computer architecture, and I think I have not covered the CISC versus RISC, right? So that also I will discuss. What is CISC and what is RISC? Ek bar dekho, that is also. So first we'll start with the CISC. So what is CISC? CISC stands for Complex Instruction Set of Computer. CISC stands for Complex Instruction Set of Computers. Okay, Complex Instruction Set of Computers. So CISC is a computer where, so as the name indicates, the complexity in the instruction will be more. That's the point. Okay, that instruction will be more complex. Okay, so CISC is a computer where a single instruction can perform numerous low-level operations like load from memory and store from memory. Okay, for example, load from memory. In load from memory, first we have to access the memory, and from there we have to read something into the register. So first memory fetching is there, uske baad memory reading is there. So there are 2 level operations. Similarly, store into the memory. Store into the memory also there are 2 operations. First आपको memory को fetch कर, memory को detect करना, उसके बाद उसमें write करना, memory write करना. Okay, so opcode fetch and इसके बाद memory write. Okay, so these are the things. The CISC attempts to minimize the number of instructions per program, but the cost of increasing the number of cycles per instruction. So complexity of instruction will be more. Complexity will be more. Number of instructions will be less, but per cost of increasing the time of execution. Time of execution per single instruction will be more, because it is a complicated instruction na, iski wajah se. Next, the design of instruction set for a computer must take into consideration not only machine language construct but also the requirements imposed on the use of high-level programming languages. So the goal of CISC is to attempt to provide a single machine instruction for each statement that is written in a high-level language. The complexity ज़्यादा होगा. एक instruction को decode करना है. एक instruction को decode करके सब division instructions को divide करना है. One single instruction is to be internally has to be divided into some modules. So that's why the complexity is more. So that's why it is called CISC. Next, if we go for the RISC, see, I will give an example. Characteristics of CISC. The characteristics of CISC are like that. A large number of instructions, typically from 100 to 250 instructions. Okay. Some instructions that perform specialized tasks and are used infrequently, not frequently, infrequently. A large variety of addressing modes, 5 to different, because more number of instructions are present, more addressing modes are also present. And variable length instruction format, this is a variable length instruction format. Instruction length can vary. Instructions that manipulates operands in memory. So number of instructions are more, complexity is more, and addressing modes are also more. The burden is also more. Then if you go for the
Example, see, for performing an add operation, CISC will execute a single add command which will execute all the required load and store. Internally, suppose if I am saying add, but remember, we have to go to the stack. So there is an operand, we have to get it. There is another operand, we have to get it. Then we have to add, and the result has to be stored in the next or under by sequential location. So there is a memory read one. There is a memory read internally, and there is a memory read to other one, and next addition. After addition, there is a memory write also. Okay, so that means internally that's why internally it is having some subdivision of operations. But all these are performed by single add instructions. Then आप imagine करो उसके ऊपर burden कितना होगा. For performing an add operation, the CISC will execute a single add command which will execute all the required load and store operation. Whereas a RISC will execute each operation for loading data from the memory, adding values and storing back. So if you take the same thing in the RISC, this is a CISC model. But if you go for the RISC now, in the RISC model, first we will take load accumulator some number. Accumulator को memory location से एक number आएगा, and next उसको add करेंगे with some other number some 22. Then we are going to store into 20,000. So number of instructions there बढ़ गया. लेकिन ये internally is divided into 4 operations. But ये number of instructions को हम increase करके, but prescribed instructions से वो भी use करेगा. Number of instructions will be less and will be using this, but internally it is having more number of operations. Here complexity ज़्यादा है, here complexity reduced. Okay, so overall time of execution here will be more. Here overall time of execution for single instruction will be less. That's what the complicated difference between the CISC and RISC. RISC will execute each operation for loading data from memory, one operation. Next, adding values, another operation. And storing data back to, this is RISC way, but whereas CISC directly single instruction add, so internally one single add instruction. So this is very, very important understanding between the CISC and RISC, my dear. You should understand this. How many of you understood the classic difference between the CISC and RISC? CISC एक single add कर दिया मैंने, add instruction बता दिया. Then add instruction what it will do? Add instruction requires 2 operands. Those 2 operands are present in the memory. Operand 1 memory read, operand 2 memory read. उसको add करो, then memory write करो. ये पूरा 4 cycles है इधर. इसका पूरा 4 cycles है. Operation cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4. Internally 4 division operation. But here RISC में हम अलग-अलग instruction use कर रहे. अलग-अलग instructions use कर रहे एक-एक operation के लिए. Is it clear? चलो. That's it. That is about the CISC and RISC. I hope all of you understood. Enough for today. Enough for today, my dear. Anybody any doubts, you can ask me. Thank you, my dear.